वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लुक मैंने ईद के लिए रिक्रिएट किया है और मैं इसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे। तो आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ ये एंगुलर ब्रश और ब्लैक आई शेडो। आपका जो नेचुरल आईब्रो का शेप है आपको उसी को फॉलो करते जाना है। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों भी आईब्रोज में। ब्रश ले लिया है और मैं अपने पूरे आईलिड पे कंसीलर लगाने वाली हूँ। छोटे स्पंज से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। को हम लूज पाउडर से सेट कर लेंगे ताकि वो क्रीज ना हो जाए। आईशैडो के लिए पहले मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज को अच्छे से डिफाइन करूंगी। अच्छे से डिफाइन होने के बाद हम ये डार्क ब्राउन शेड लेंगे और इसको हम आउट ऑफ वी सेक्शन में लगाएंगे। और इसको अंदर की तरफ अब हम ब्लेंड करेंगे। छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। अब हम हल्का सा ब्लैक आई शेडो लेंगे और इसको आउटर कॉर्नर में लगाएंगे, बट हमें अपने लैश के लिए एकदम नजदीक रखना है, ज्यादा बाहर की तरफ मत निकालना। फ्लैट आई शेडो ब्रश ले रही हूँ। नाउ यू कैन टेक एनी ऑफ द गोल्डन कलर और कौन सा भी लाइट शेड आपके पास हो तो आप वो ले सकते हो। मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ अभी। आपको बस इसको आई बॉल तक ही लगाना है। Liner, I'm using this L18 liquid liner. काजल यूज कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे लगाने के लिए। Now again I'm taking my smaller blending brush और ये डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाने के लिए। इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी यूजिंग द सेम स्टार्स हाइलाइटर।
डन विथ माई सेकेंड आई एज वेल और मैंने फेक लैशेस भी लगाए हुए हैं एंड दिस इज व्हाट माई फाइनल लुक। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, I'll see you in the next video guys. Bye.